बहुत ही फ्रैंक सा पॉइंट है, आजकल ग्रेजुएट्स को कोई नहीं देखता है। कोई भी फर्म में चले जाओ, दे विल नॉट लुक एट यू। जो ग्रेजुएट्स करंटली KPMG में भी आए हैं, उन्होंने 7 months काम किया है, वो भी आप लोगों के जैसे जा रहे हैं। उन सब ने अपना कैट का एग्ज़ाम दे दिया है, अब वो चले जाएंगे। First up, guys, let's start with your introductions. Who are we talking to today? दिल्ली से आने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? यहाँ बहुत दूर से तो नहीं आ रहे हो आप लोग? नहीं, पास से ही हैं, गुड़गांव से आए हैं। So hi guys, I am Nandini Jain and I have done my MBA in finance. Currently I'm working in KPMG forensics. I'm a fraud investigator. From graduation I have done BCom honors. So yeah. Great. And Shrey? Yeah, hi everyone. My name is Shrey Mehta and I am a senior to the college, and I've also done my graduation in finance, and currently I'm in with Barclays as a credit underwriter. So I'm going to ask Nandini, when you were making that decision, when you wanted to get into a B school, what were you thinking? What were your expectations of a B school that you probably want to get into? So basically I'm a fresher. मैंने कोई जॉब नहीं करी थी अपने MBA से पहले। मैंने BCom के बाद डायरेक्टली MBA में एडमिशन ले लिया था। तो मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप MBA करते हो ना, तो आपको एक बिज़नेस की नॉलेज होती है कि एक बिज़नेस शुरू कहाँ से हो रहा है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, वो सब आता है। तो अगर जैसे मैंने MBA करनी है तो मेरे पास ऑपरेशंस की नॉलेज है, मेरे पास HR की नॉलेज है, मेरे पास फाइनेंस की नॉलेज है, मार्केटिंग की नॉलेज है। वो सरफेस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी फील्ड में जा रहे हो। तो आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि अगर मैं फॉरेंसिक्स में हूँ अभी करंटली इन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, और अगर मुझे किसी इंडस्ट्री में जाना है, एग्जांपल FMCG या फिर ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, तो मैं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास नॉलेज है उस चीज़ की कि हाउ इंडस्ट्री वर्क्स। तो वो मुझे नॉलेज एक MBA की उससे आई है। तो इसलिए आई फील MBA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग एक चीज़ के अंदर घुस गए, फाइनेंस में घुस गए, और आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की नॉलेज है, ये कि फाइनेंस इसमें इस इंडस्ट्री में कैसे काम करेगा, बट आपको ये नहीं पता कि वो इंडस्ट्री कैसे काम करेगी, तो वो मतलब नहीं बना। तो इसलिए MBA एज अ होल आपको एक पर्सनालिटी ग्रोथ के अंदर बहुत हेल्प करेगा, आपका डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, और आपको पता चलेगा कि आपको इसके बाद भी, बहुत लोग होते पढ़ते हैं, इसके बाद भी PhDs करेंगे वो। तो जब आप MBA कर लेते हो ना, तो आपको समझ आता है कि अच्छा अब हम आगे ये कर सकते हैं, फिर अब हमारी करियर ग्रोथ ये है। क्योंकि आप कर सकते हो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स या मास्टर्स इन XYZ, बट MBA इज़ अ होल डिफरेंट प्रोग्राम। वो आपको इस लेवल से इस लेवल ले जाने में बहुत हेल्प करेगा। सेकेंडली बहुत ही फ्रैंक सा पॉइंट है, आजकल ग्रेजुएट्स को कोई नहीं देखता है। कोई भी फर्म में चले जाओ, दे विल नॉट लुक एट यू। जो ग्रेजुएट्स करंटली KPMG में भी आए हैं, उन्होंने 7 months काम किया है, वो भी आप लोगों के जैसे वो जा रहे हैं। उन सब ने अपना कैट का एग्ज़ाम दे दिया है, अब वो चले जाएंगे। बिकॉज obviously you need some specialization course to add in your resume, to add in your growth, your personality. So I feel that's why we do MBA as a person. Yeah. No, but what were you looking for? So for example, XYZ चीज़ें आप देखते हो ना, so you look for the alumni, you look for the curriculum, you look for the faculty. So what were you looking for personally? First and foremost is the placement. हम लोग सब प्लेसमेंट के लिए आते हैं MBA में, ठीक है? तो प्लेसमेंट ये रील बनेगी। तो प्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब एक B स्कूल को डिसाइड करने के लिए। सेकेंडली उसका करिकुलम क्या है, जैसे जो कॉलेज में मैं पढ़ी हूँ BML से, उधर का करिकुलम फॉरेन यूनिवर्सिटी से आता है, जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है? उसके अलावा जो उधर की फैकल्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो कैसा पढ़ा रही है। क्योंकि तुम्हें थ्योरेटिकल नॉलेज दे देंगे, बट वो समझ भी तो आना चाहिए ना। तुम्हें सिर्फ किताबों की तरह भर दो, वो तो पढ़ ही रहे हैं, शुरू से बचपन से वही काम कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं। आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जब सब सीखने को मिलेगा, वो चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है फ्यूचर में। एंड
उसके अलावा ऑब्वियसली हॉस्टल लाइफ, रेजिडेंशियल 8:30 बजे से रात के 12:30 बजे तक। उसके बाद सुबह उठकर हमें असाइनमेंट्स देनी होती थी। हम पूरी रात 4 बजे तक 5 बजे तक अपना काम कर रहे हैं। हमारे हॉस्टल में भी क्या है 1:30 टाइमिंग है, तो 1:30 के बाद आओ, मतलब 1:30 AM तक आप अलाउड हो, आप बाहर घूमते रहो, हमारी लाइब्रेरी खुली रहती है। उसमें बैठ के हम अपना काम कर रहे हैं, असाइनमेंट्स दे रहे हैं। तो बहुत विग्रस प्रोग्राम है ये वाली चीज़। तो उस चीज़ के लिए मतलब आप लोग को रेडी होना है आपके फ्यूचर के लिए। तो ये सब चीज़ें मतलब दिमाग में आती कि यार अच्छा हॉस्टल लाइफ ये होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये होगा, प्लेसमेंट ऐसी होगी, वहाँ का कनेक्टिविटी कैसे होगी, ये सब एक बी स्कूल को डिसाइड करने से पहले हम ये सब सोचते हैं। अगर आप देखो बाकी कॉलेजेस की मीन अगर देखा होगा तो 8.5 लाख 9 लाख वो सब जा रही है इन सब कॉलेजेस की। लेकिन अब वो आ गया यार मुझे घर भी तो आना होगा, मुझे ये भी तो करना होगा, मुझे वो भी तो करना होगा। तो ये सब चीज़ें हर एक फैक्टर प्ले करेगा आपका एक बी स्कूल डिसाइड करने में। और मतलब MBA तो कर लिया, अब कैट अगर तुमने दिया है तो MBA करने के लिए दिया है ना, वो तो तुम असल में डिसाइड कर ही दिया है। अब बी स्कूल कौन सा लेना है उसके लिए यू हैव टू मेक अप योर माइंड एंड यू हैव टू सर्च कि अच्छा ये वाला कॉलेज में ऐसा होगा, उसके एलुमनाई से बात करो। और मतलब मेरे भी माइंड में ये सब चीज़ें थी और फिर मैंने उससे फिर मूव ऑन करा। आपने श्रेय से बात की थी लिंक्डइन में? नहीं, तब बात नहीं करी थी मैंने श्रेय से। श्रेय आपने किसी से बात की थी? हाउ ओल्ड इज BML? इज इट लाइक अ वेरी न्यू MBA प्रोग्राम दैट दे हैव स्टार्टेड? जब आपके टाइम पे थे तो वे देयर इनफ एलुमनाई मेंबर जिनसे आपने पहले पूछ के आपने डिसीजन लिया कि दैट यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम? So, the BME was founded in 2014. So then engineering and MBA programs were started there. So the first batch that went out in MBA was 2016. So so mine was, I guess, the fourth batch that I went. So I interacted with few of the students from the second year who had just got the placements or who were pending or who were left behind, and they were in some process, or like they were like we will do business or something like that. So I interacted with them, advice from them, like have you given any advice to the team, to the placement team or to the academics team, like this happened for your seniors, and they might have given some feedback. Have they taken it? Are they aligning the programs to the more to be more industry oriented? And what changes and what look at the pedagogy, or you might say the technique, or the thought process that they are changing in for the placements. Like if, for example, I'm taking this opportunity that I have some few companies in pipeline, right? And I'm approaching them, few might turn up, few they say like we will see, something like that. So what changes are they doing in that? Like getting the companies on campus, something like that. So I interacted with few of them. Then I went to the placement team just for kind of cross check, like कितने जो यहाँ ये बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं, कितना चीज़ें मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही, and that's it. Like, okay, I was going to interject you because I had a question in mind for Nandini, and when you're choosing your specialization, so even if you have like a commerce background, even if you know for a fact that finance is something that you probably incline towards, as students it becomes more difficult when you get in there and then you understand अच्छा marketing में तो ये कर सकते हैं, this is the potential that probably you have. Or say for example you know there is some other sector that you want to go to, आपको supply chain में बहुत interest है and then you choose that. As a student, how do you make that choice? Is it just because you have studied something that forces you to take that up, or is it the curriculum that is designed in such a way that makes you interested in XYZ? Or is it just, as you mentioned, placement किस में ज़्यादा मिलेगा, पैसे कहाँ ज़्यादा है? ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ का कि इस फील्ड में पैसा बहुत है तो हम इस फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम तक ही रहेगा। उसके बाद ऑब्वियसली आपको अपना जो चीज़ आपको पसंद है करना है वो कर सकते हो। सो लाइक आंसरिंग योर क्वेश्चन कि हमें कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, हमारा जो करिकुलम है ना वो ऐसे डिज़ाइन है MBA का इंडिया के अंदर कि जो फर्स्ट ईयर होता है ना वो जनरल MBA कराता है और सेकेंड ईयर होता है वो आपका स्पेशलाइजेशन वाली MBA कराता है। तो जनरल MBA में आप HR के बारे में पढ़ोगे, ऑपरेशंस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, फाइनेंस के बारे में, मार्केटिंग, मतलब एवरी जो सब्जेक्ट जो एक MBA को होना चाहिए वो सरफेस लेवल पर आपको सिखाया जाएगा। जब आप उसको हर सेमेस्टर में, हर मॉड्यूल्स में पढ़ना शुरू करोगे
तो फिर समझ आएगा कि अच्छा ये वाली चीज़ में हम जा सकते हैं, इसमें मेरा इंटरेस्ट है. तो देन यू चूज़ योर स्पेशलाइजेशन इन द सेकेंड ईयर. सो माई स्पेशलाइजेशन वॉज फिनेंस प्लस ऑपरेशंस. तो ऑपरेशन से मुझे समझ आया अच्छा मुझे P2P साइकिल, O2P साइकिल एंड नंबर ऑफ थिंग्स सप्लाई चेन में मुझे इंटरेस्ट है. तो वो चीज़ मुझे जब मैं फर्स्ट ईयर में आई एंड वो भी लास्ट मंथ ऑफ द सेमेस्टर, मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि नो आई वांट टू गो इन फाइनेंस. इट डजंट मीन कि मैंने कॉमर्स लिया है, B.Com करा है एंड जो भी करा है मैंने वो मैं इसकी वजह से ले रही हूँ फाइनेंस. नहीं, मुझे 1 साल लगा समझने में कि मुझे इस फील्ड में जाना है. उसके बाद उसकी करियर अपॉर्चुनिटी, करियर ग्रोथ क्या है और उसकी प्लेसमेंट कैसी है मेरे कॉलेज में, वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगी. तो वो सब चीज़ों का माइंड में ध्यान रखें एंड देन आई चूज माई स्पेशलाइजेशन. Right, and when you are, sitting for summer placements, when you know for a fact that ठीक है ये companies आती है college में, do you be like the first person to raise your hand कि हाँ मुझे ऐसे जाना है, or what is the process like? How do you get into these companies? So, for example, KPMG when happened to you, how did that KPMG process, happen for you? Was it like a few people that KPMG was selecting and you happened to be there? Was it something that KPMG came and decided that we need these many people, that's why we are picking those up? How does that process work? सो बेसिकली जो भी कंपनीज आती हैं कॉलेज में प्लेसमेंट पे, दे हैव अ सर्टेन नंबर इन देयर माइंड दैट दे आर गोइंग टू पिक दीज मैनी स्टूडेंट्स. सो फॉर मी when I was selected for KPMG, before that I gave interviews for 4 other companies, including Wipro, EY, and Deloitte, and one of the other companies. I was not selected for those placements. So what generally the process is, for me जब KPMG कॉलेज में आई थी, बिफोर दैट जो KPMG का एक प्रोग्राम होता है फॉरेंसिक्स का जो कॉलेज में रन किया जाता है, स्पेसिफिकली दिस कॉलेज, वो एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर दे टेल अस अबाउट व्हाट फ्रॉड्स आर, व्हाट फॉरेंसिक्स, लाइक इफ आई टेल अबाउट व्हाट फ्रॉड्स आर, तो वो फ्रॉड्स होते क्या है एंड देन उसके बाद वो करा कैसे जाता है, वो सब चीज़ें हमें सिखाई गई. सो वी हैव दैट थोड़ा सा नॉलेज हमने लिया. तो उसके बाद देयर वर ओनली 16 स्टूडेंट्स हु वर सिलेक्टेड फॉर दैट कोर्स. उन 16 स्टूडेंट्स में से हमारा जनरल PI वगैरह हुआ, प्री प्लेसमेंट टॉक हुई. सो देयर इज़ अ सर्टेन पैरामीटर्स दैट यू हैव टू बी 60% थ्रू आउट. फॉर एग्जाम्पल इन 10th 12th उससे अगर आपका कम है तो वो नहीं लेते हैं, उनका वो जनरल प्रोसेस है. उसके बाद आपका हमारा HR डिस्कशन होता है जो 1-to-1 होएगा. इफ़ यू गेट शॉर्ट लिस्टेड इन दैट केस उसके बाद हमारा एक मैनेजर लेवल पे इंटरव्यू लिया जाता है. अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हो एंड देन देयर इज़ अ डायरेक्टर इंटरव्यू. तो डायरेक्टर इंटरव्यू के बाद एंड देन यू आर प्लेस्ड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी. तो फॉर मी KPMG का ये वाला प्रोसेस रहा था. And Shrey, for you, you were a credit analyst at Axis Bank. Is the job that you got? What exactly does a credit analyst do? आपने MBA करने के बाद जब आप Axis Bank में गए, what was the profile like? Did you have an idea in your mind कि अच्छा MBA करने के बाद ऐसा job करना पड़ता है या फिर this is how the life looks like, or did you have a different sort of an idea? So again, for this question, I'll take you to, I'll give some background. So like during our internships, so Axis Bank came and they picked quite a good number of students. So the profile that they picked us for was for general like opening of current accounts and cash management services, forex services. So these kind of the general relationship managers guys that you might find even you visit some of the branches, be it private or public sector banks. So we were selected for that role, and then we completed internships, and our feedback was given from the bank side to the college. Then they also, Axis Bank also came for the final placements. So out of 47 students that did internships, so they shortlisted 30 students. So the interview process was for 30 students, and out of those 30, 18 were selected. So after like I got the credit analyst role later on. I was first selected for that sales profile, being a finance guy, being a specialization in finance, and I was selected for that sales profile. And like since I was already shortlisted, so at that time like the university did not allow me to opt out. So I had to sit, and since I said like, "ठीक है," I said when I'm going, because I had a good exposure of forex during my internship days, so I'll make forex, like forex is also finance linked. I'll make career in forex, not an issue. So I happily took that profile, and but initially, like when I landed up there,
the office that I landed, that there was some urgent and important project that came up. So we had to enroll like few of the dealers and vendors of Havels with Axis Bank for some kind of bill discounting facility. So for the next 2 months, I was deployed in that. So if you have heard of some kind of CIBIL reports, if you might have, whenever you will apply for some loan or something like that, CIBIL reports is one. So for the first 2 months, I only did some of the few basic checks, basic what you can call due diligence. The fraud guide my related well. So we did due diligence for adding. So I did around 1,200 dealers and vendors for Havels, and within a period of 2 months. So I was that like recognized at that time. So that project went on. Then my boss, he said that you have done MBA in finance. मैं yes sir. So he said कि फिर ब्रांच में कब जाना है? मैंने कहा सर सेल्स नहीं करनी, आप एक बार इफ़ यू कैन, बोले चल ठीक है दोनों करके देखते हैं, जहाँ तू अच्छा करेगा वहाँ रखेंगे. मैंने कहा ठीक है. तो he gave me few of the cases for credit underwriting, and I wrote some reports. He liked it. So, and that's how I landed in credit analyst role. So basically in credit analyst, like in banking sector, what I like about this sector, or what I like about this profile is that you get to know how of like various other industries, right? Because we got proposals, lending proposals from auto dealers, from electrical companies, from chemical companies. So you get to know how of the various business models, like how they are operating on MSME level, how they are operating on a large corporate level. Right. Let's talk to you, Nandini, for a while. Fraud manager is something that we don't hear much, but then maybe because my exposure is not that much in the industry. What exactly does a fraud manager at KPMG do? What sort of a role is this? Is it like a finance heavy, an operation heavy, as you were mentioning, a mix of both? And how lucrative is this as a career in terms of the growth that you can get from here? So basically, fraud is something very niche in India specifically. What we do, so I'll just give you an example. You must have heard about the Shrey Mehta case, right? So basically, it's a fraud case. But वो चीज़ आई कैसे, बाहर कैसे आई? So that's what KPMG do, what we do. So, for example, there is a FMCG company, and we see that there are some different numbers going on here and there. So that particular company will come to us and they say, please check our process and check our books and everything. And please tell us if there is something wrong in this. There can be high chance that some of the employees are doing some kind of frauds. तो वो फ्रॉड्स कैसे होंगे? मैक्सिमम फ्रॉड्स होंगे प्रोसेस गैप्स की वजह से जो उस कंपनी में है. तो वो एज अ कंसल्टेंट हमें निकालना होता है कि वो गैप्स क्यों आ रहे हैं. अब वो गैप्स आए हैं तो उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे. तो वो वाला फ़ायदा उठाकर अब देयर आर एन नंबर ऑफ फ्रॉड्स, एन नंबर टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स जो एक एम्प्लॉय कर सकता है एक फर्म के अंदर. तो वो हमारे ऊपर होता है कि हम कैसे निकाल रहे हैं. अब उसके लिए हमें उनकी ईमेल्स रिव्यू करनी होती है, डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, उनका मोबाइल होता है, उनका लैपटॉप होता है, उनके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं. सो ऑल दिस इज़ बिकॉज हम लोग को एक पर्टिकुलर चीज़ निकालनी कि यार ये वाली चीज़ हो रही है, ये प्रॉब्लमैटिक है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट कि कौन से एरिया के अंदर स्पेसिफिक है, तो ऐसा कुछ नहीं है. KPMG फॉरेंसिक्स में लॉयर्स भी हैं, MBAs भी हैं, CAs भी हैं, सब टाइप के लोग हैं वहाँ पर. ऑपरेशन स्पेसिफिक लोग भी हैं. बिकॉज वही बात आ गई कि एक इंडस्ट्री है, अब इतने सारे इंडस्ट्रीज़ है, हर टाइप के इंडस्ट्री में फ्रॉड्स हो सकते हैं. तो वो आपके पास आएंगी और आपको हर टाइप का इंसान चाहिए उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि यार ये चीज़ हो सकती है इस पर्टिकुलर जगह पर. तो दैट्स व्हाट स्मॉल में समराइज करूँ कि व्हाट अ फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर डू. And what is the career graph from here? Like आपने शुरू किया है यहाँ से from this role. How do you go up from here? If I talk about the KPMG particularly, so this is like Acon and then consultant and then managers and above. So if अगर तुम्हें switch करना है after 1.5 years for your career growth, इंडिया के अंदर इतना मेरे हिसाब से इतना नहीं है. फॉरेन के अंदर बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, स्पेसिफिकली US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्ज़रलैंड. इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्कोप है. मतलब दे लुक फॉर पीपल स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडिया कि ये इस चीज़ में आएंगे. तो इंडिया के अंदर भी है इसका है, लेकिन उतना नहीं है करियर ग्रोथ इस पर्टिकुलर सेगमेंट का.
Talking about foreign companies, you right now work at a company which is a foreign company, I assume, and we are talking about Barclays. Uh, how did that switch happen to Barclays? Like Axis Bank में आप काम कर रहे थे. You were working for 2 years, I think. I One and a worked in half. Access for 2.5 years. 2.5 years. So from there, you became a credit manager at an international bank, which is a Barclays. Do they do business here with the customers? I don't think they have regular customers the way the SBI or the Punjab National Banks of the world do, or the ICICIs of the world do. So what exactly Barclays does? What exactly does Shrey do in a bank like Barclays? And how did that switch take place? Right. So, like after Axis, I went to another Indian bank that was a small finance bank because I was getting a good opportunity in a kind of a bigger format. But eventually, that team could not land up in North India. I was hired for that role. So I was placed in a comparatively smaller setup that I generally do not use to look up when I was in Axis Bank. So I waited for like that team to set up, but eventually I joined that bank for around 15 months. Then I switched. Then I said like, for the time being, I'm done with some kind of Indian banking. I've got that exposure. I've got that realm, that how Indian banks work and how a big Indian bank work, how a small finance bank works in India. Then I wanted an exposure. I wanted either to go to a rating agency. You might have heard some rating agencies, Fitch and S&P, Moody's, some kind of. So they have their Indian arms here as well, CRISIL, Care, some kind of. Either I wanted to land there or I wanted to go to a MNC bank. So I got to know that there is an opening in Barclays, and I wrote their exam. I gave the interview, and then that's how like they had at the time they had an opening, so I was hired there. And on the work profile was that like Indian banking and foreign banking is a lot of difference in kind of process and something You in make kind it of sound products. so easy that you found a Barclays job opening, you gave an exam and just हो गया. No, ऐसा no. मतलब सबको नहीं होता ना ये. हाँ सबको How? नहीं होता है eventually. Actually like when I switched from Access to a small finance bank, then I got interacted with many of the consultants, right, that operate HR consultants. So I had their numbers saved. So and I also placed my CV on the Naukri.com. So after like around a year or something that had passed in that Equita Small Finance Bank. So one of the consultants called me that we had an opening in Barclays, something kind of. So are you interested? I said I'm very much So interested. basically it's your network that helped Yeah, you. yeah. I still have their numbers. Great. Uh, Nandini, fresh out of college, and you probably are working with some of the smartest minds in the country. Uh, what do you sort of take out of your B school that helps you in places like these? So एक तो हो गया आपने जो चीज़ें academically सीखी वो सब तो है. Along with that, what do you take back with you as a person who probably went into a B school first year knowing very little about certain things and then getting out of there, जो अभी आप job कर रहे हो, how is that helping you in return? सबसे पहले इट्स लाइक वर्किंग अंडर प्रेशर. तो MBA बहुत विग्रस प्रोग्राम होता है एंड देन you have to study whole night, you have to prepare assignments, you have to complete everything. So currently as Big Four, so in work, working culture is very different. For me personally, I'm working like 9 to 8, 9 to 9, sometimes even 9 to 2 a.m. So this is like I have to be very prepared. My time management should be good so that I can work, I can give results efficiently. So this is the one thing I learned from MBA that is helping me. Apart from that, time management and other stuffs will probably help me, but majorly the theoretical part, obviously. I'm going to open the house for questions. Any questions? Any hands? It's a very simple question. For the being an MBA student, you told me that you got 90%, right? And being gender diversity on your side and academic diversity on your side, then why did you choose this college? You could have easily gotten into many IIMs and actually a college very nearby, I think Ghaziabad. So what made you choose this college? What were the parameters that made you sideline those colleges which have some good names, and choose this? घर सामने होगा. Sorry, please. So basically, my perspective of choosing this college was कि
I don't know, I want to go to a foreign country. So they look for a degree and they provide PGDM courses each and every, like you would name IMT Ghaziabad, right? So basically, for BML Munjal University, I get a degree, not a diploma. So when if I get the degree and if I apply to any other company or college in a foreign country, so in that case, they are going to look for the degree thing. Apart from that, my perspective was it is affiliated with Hero Group, so placement is very good, and uh, the placement of other good colleges, the mean median मोड निकाल लिया होगा सबने बाकी colleges का भी, तो उसमें भी आपका उतना ही जाता है जितना उस टाइम मेरे कॉलेज पे उस टाइम पे था. तो there are some factors जो मेरे को लगा कि मुझे BML में जाना चाहिए. तो yeah. Thank you very much for being so candid, both of you. I really enjoyed the conversation from the fact that you guys were honest about certain things that you said. A lot of times what happens is people hold back a lot of information on what they have, and that doesn't help in general. But I feel that you didn't hold back on a lot of information, and I feel that some of it was helpful and informational for them. If you liked this conversation towards the end of this session, help them with a huge round of applause.